गाइस, यूट्यूब चैनल सखी ब्यूटी पार्लर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं हूं माधवी खन्ना। और आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स कि आज हम आपको हेयर क्रम्पिंग करके बताने वाले हैं फ्रेंड्स। हेयर स्टाइल जो भी करते हैं हम ब्राइडल की या फिर पार्टी हेयर स्टाइल जो भी बनाते हैं पार्लर में, तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हेयर क्रम्पिंग किस तरह से बालों को क्रम्प किया जाए। हेयर क्रम्पिंग का यह फ़ायदा है फ्रेंड्स कि हेयर क्रम्पिंग से हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बनता है और बहुत अच्छा लुक आता है। जिनके भी थोड़े पतले हेयर होते हैं वो उसमें बहुत सुंदर घने और बहुत अच्छे दिखते हैं। और आइए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा ये हेयर स्टाइल क्रम्पिंग होने वाला है बालों में। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास में हेयर क्रम्पिंग मशीन होना ज़रूरी है। तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, फिलिप्स की, नोवा की, हर तरह की मार्केट में आजकल हेयर क्रम्पिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। हमारे पास है VGR की हेयर क्रम्पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं। प्रोफेशनल हेयर क्रम्पर है ये। इससे 30 सेकंड में ही बहुत अच्छे से बाल हेयर क्रम्पिंग हो जाते हैं। और जनरली पूरे बालों में क्रम्पिंग नहीं किया जाता है क्योंकि हेयर स्टाइल सामने से बहुत अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम सामने के पोर्शन में ही हेयर क्रम्पिंग करेंगे। और पूरे बालों में भी कर सकते हैं पर उसका थोड़ा बालों को नुकसान होने का थोड़ा सा टेंशन होता है, इसलिए हम पूरे बालों में नहीं करेंगे। और हमारे डमी पे हम हेयर क्रम्पिंग करेंगे। तो आइए आज हम हमारे डमी पर करके बताएंगे कि किस तरह से हम हेयर क्रम्पिंग करेंगे। सबसे पहले हमें स्विच ऑन कर देना फ्रेंड्स कि 180, 190, 200। तो हम 200
इसमें धुआं निकलने लगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये धुआं निकलता ही है जब हमारे बालों में आयरन होता है, तो ये स्वाभाविक है कि थोड़ा सा धुआं निकलेगा, मगर इससे कोई नुकसान नहीं होगा या फिर कुछ नहीं, क्योंकि हमने जो इसकी जो ये रखा है, हमने इसका पावर वो मीडियम रखा है, जिससे कि बाल जलेंगे नहीं, कुछ नहीं। इससे ज़्यादा पावर रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो हमें 200 पर हम कर सकते हैं आसानी से। और जो नए बच्चे हैं, जो नया अभी सीख रहे हैं, उनके लिए भी इस मोड पे रखना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इससे रिस्क नहीं होगा और बालों को कोई नुकसान नहीं
किया जाता है।